company, please ask your question. Sure, ma'am. Good morning. So my first question would be that what are some challenges that you have faced in your career as an entrepreneur, and even after facing them, what gave you the motivation to never give up on your dreams and finally achieve your success? थैंक यू मनस्वी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. इट्स ऑब्वियस कि कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको ये पूरा प्रॉब्लम्स आते हैं कि कैसे उसको करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है. तो फर्स्टली जो आपने क्वेश्चन पूछा है उससे पहले अगर मैं अपनी जर्नी की थोड़े से बात करती हूँ तो आपको ये सिंप्लीफाइड होगा कि कैसे स्टार्ट हुआ. जैसे आप लोग ये इवेंट में आए हो, सिमिलरली आज से 7 इयर्स बैक अगर हम देखते हैं तो हमने भी ऐसे ही एक बहुत बड़े इवेंट में पार्ट लिया था एज अ ऑडियंस. जैसे आप लोग प्रेजेंटर हो लेकिन एज अ ऑडियंस मैंने पार्ट लिया था. वो प्रोग्राम था वाइब्रेंट गुजरात 2016. तो icreate के थ्रू हम वहाँ पहुँचे थे कि आप अटेंड करिए और देखिए कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स कैसे अपना आइडिया लाते हैं और आइडिएशन को कैसे प्रोडक्ट में डेवलप करते हैं. तो मैंने उसमें पार्टिसिपेशन किया और उस पार्टिसिपेशन में मैंने ये चीज़ देखी कि आप कोई एज गैप नहीं है. लाइक 18 इयर्स के स्टूडेंट्स भी हैं, 65 इयर्स की ओल्डर लोग भी हैं, जिन्हें मैं ओल्डर नहीं कह सकती बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ पैशन फॉर देयर स्टार्टअप. सो वहाँ पे मैं एक लेडी से मिली जो कि 65 इयर्स ओल्ड की लेडी थी, मैम थी. तो उन्होंने अपना जो गुजराती स्नैक्स होते हैं उन्हें जो है कन्वर्ट किया था अपने स्टार्टअप में. तो मैंने उनसे काफ़ी डिस्कशन किया कि मतलब क्या क्या जर्नी उन्होंने ये देखी, किस तरह से उन्होंने प्लान किया. तो नेचुरल है कि आपके पास एक एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट होता है, चीज़ होती है. मतलब इनोवेशन लाइक ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत मैजिकल चीज़ या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ करें. जस्ट आपके पास वो एक नज़रिया होना चाहिए कि जो रेगुलर चीज़ें हैं उनमें हम अलग हट के क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो सिमिलरली उन्होंने जिस तरह से बताया कि जैसे पैकेजिंग में प्रॉब्लम आता है, हम उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, ऐसे हमारा मेथड है. तो कुछ उसी चीज़ों में जो एग्जिस्टेंट चीज़ें हैं उसी में उन्होंने थोड़ा बदलाव किया. तो सिमिलरली जैसे आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा, तो मैं एक ऐसे कन्नौज से आती हूँ जहाँ पे एंशियंट आर्ट अतर का जो नेचुरल परफ्यूम का बिज़नेस है वो कई सालों से चला आ रहा है. वहाँ पे 300 से 400 इंडस्ट्रीज़ हैं. लेकिन जब मैं उसको कंपेयर करती हूँ फ्रेंच परफ्यूम से, फ्रेंच परफ्यूमरी से, तो मैं देखती हूँ कि ये इतना ग्लोबली ब्रांड की तरह क्यों नहीं आया है निकल के. क्यों मुझे हर शॉप में एक इत्र क्यों नहीं दिखता है कन्नौज का, क्योंकि जो भी इसके सेगमेंट है वो बहुत ही इतर लवर्स हैं. तो उस क्वेश्चन ने एक चीज़ मेरे अंदर रेज़ की और उन मैम से बात करने पे मुझे समझ में आया कि मेरे पास हेरिटेज परफ्यूमरी का पूरा एक बैकग्राउंड है. लाइक उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है जोग्राफिकल इंडिकेशन का कन्नौज को, कि वो नेचुरल परफ्यूम के लिए फेमस है. तो मुझे लगा इसमें प्रॉब्लम आती कहाँ है जो ये ग्लोबल चीज़ तक नहीं जा सकता. तो मेरे में भी प्रॉब्लम ये है कि इधर बहुत स्मॉल बॉटल्स में मिलते हैं, वो इतने लाइक एक अट्रैक्टिव बॉटल्स में प्रेजेंट नहीं किए जाते. और उनको एक तरीके से ये चीज़ है कि आप उनको स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस रहता है, वो बैलेंस आउट नहीं आता कि मतलब उसका एक सेगमेंट है जो पसंद करता है. लेकिन यूथ जो है जो फ्रेंच परफ्यूमरी या और परफ्यूम्स को ज़्यादा पसंद करता है. तो मैंने फिर उसी पे काम करना स्टार्ट किया. तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अपने प्रोडक्ट का रिसर्च बहुत करना पड़ता है कि ये सच में इसके रियल कस्टमर्स हैं कि नहीं. वैलिडेशन जो भी मैंने वहाँ से सीखा और इंस्पायर होकर मैं लौटी, तो मेरा इसका यही चीज़ था कि स्टेप बाय स्टेप जाके हमें इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है. और जब हमें रियल कस्टमर्स और रियल वैलिडेशन मिलता है तब हम उसमें एक कॉन्फिडेंस लाते हैं कि हाँ ये इट कैन बी अ गुड प्रोडक्ट. So Manasvi, did you get your answer? Because नैना जी बहुत ही खूबसूरत स्टोरी सुनाई आपने और काफ़ी प्रेरणादायक है कि कहाँ एक छोटी सी शुरुआत और कहाँ तक ये आज पहुँची हैं. इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा कुछ कर पाएंगी, बट एक छोटी प्रेरणा कभी कभी हमारे ज़िंदगी का मकसद बदल देती है. तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो मनस्वी, आई होप you got your answer and you also get inspired from Naina, and many Nainas are there in our country who are an inspiring woman entrepreneurs which you will look forward, right? Yes, ma'am. Yeah. So I would now ask Irsha. She's generally very shy and quiet, but yes, Irsha, I want you to ask the question to Prasoon. Sure, ma'am. So as we know that our mindsets change as the time passes, and how did you grow personally, and what was your mindset before and after you started your business? You mean budget, right? What's the mindset?
Mindset, all So right. the mindset, Yeah. okay. So let me rephrase the question कि आपने किस तरीके से इस mindset को किया and how did you thought about this? You want to start this entrepreneurship and you got into this. So basically, 15 years I was being researcher, and in my research journey, I have seen a lot of R&D happening. I myself got into a lot of projects in CSI labs. When I was in IT, when I was in IT Bombay, that time I realized that yeah, we are doing research, we are publishing papers, but that research is there at anywhere? Is it contributing to society, or it just for profile sake? I mean, when we do the research, just because we can do it, that doesn't mean we should do it. We have to first understand that is it going to contribute somewhere, though it is solving the problem, but that research, is it replicable? So it triggered me, and it became like and that was a golden time into 2014. That time this entrepreneurship era initiated, and this techno commercial interface, this is what I feel is like very important to propagate. So after publishing a lot of papers and got involved into PhDs and everything, then I realized, yeah, why I stuck to only one project. In PhD also, when we do the PhD, like 4 years, 6 year minimum it takes in India, and we will be keep focusing on one topic. That's a good thing. Of course, that's the important thing, but you should not. You should solve the problem, and you should parallelly use your brain for other diversified problems as well. Otherwise, you will be expert in one field, but then you won't be the useful for another field. See, this is a pure interdisciplinary era now. It's not like that. If you are from engineering background, then you can't get into art background. If you are from medical background, then you can't get into engineering. It's nothing like that. One of my friend, he's a neurosurgeon, and he designed the aircrafts. Being a neurosurgeon, he designed the aircrafts. So it's a pure interdisciplinary era, and this is how we have to understand the problem and solve it accordingly. So basically, that's what it triggered me that let's get into it. And coincidentally, there was a requirement from BARC for zero valent nickel nanoparticles. And BRC team was, their purchase team was struggling to get those nanoparticles from, imported from US. It was like 6 months, they were like into trouble, like they were not getting clearance and all those things. So one of my friend, Dr. Panda was there. He was at that time, I think, C-level scientist. So he called me and he asked me, Prasen, can you make it? Because we really need this particle, and that's why our research got stuck. So, and I asked for his requirement. He wanted nanoparticles, the zero valent nickel nanoparticles of 99.99% purity, and particle size should be less than 100 nanometer. Now, pardon me for these technical words, but then I told him that I don't have characterization facility, but I'll synthesize it for you. See, synthesizing nanoparticles, you require a clean rooms. You need to avoid lot of contamination to properly nucleate and grow the particles Okay, with targeted Prasan, size. I'm so sorry to interrupt. Sure. Yeah. So thank you very much for giving that brief description about the journey that you have gone through. And yes, I agree to certain challenges that you faced during your research that you were doing, and you learned a lot. And there also should be a mindset, what she was mentioning, because we all have that in us, but we need to view that. Can I do it? And I can do attitude can take you to that
topmost level, right? Because if you're not comfortable and confident about yourself, nobody can build that in you, right? So to become an entrepreneur or start a company, we all think that, okay, it's a really a fancy word, and people will become rich. Like when we look at entrepreneurs, like whether it's Elon Musk or anyone in the top position, we think it's easy. But if you look at their journey, they have their own struggles, challenges, they have various ups and downs, and after multiple failures, they all have a name in the society, and still they haven't stopped, right? So how many times you fall, you need to get up and bounce back. And that's what we need to learn, and that's what Prasen was trying to explain, that irrespective of the challenges and the things that he has gone through, he didn't give up, and he continued doing what he was trying to achieve. And I hope he has reached to that level, and may he see more heights. Right, so Irsha, yes, you have a question? Yes. So when it comes to mindset, I just wanted to add a point from a student perspective. So we've all been here. From the Atal Innovation Mission, the government of India, and we know that one of their flagship programs is the Atal Tinkering Labs. And that's where I think the key point that the question was asked upon, that is the mindset perspective, comes into place. Because the Atal Tinkering Labs for us students is doing an exceptionally great job at building that mindset. Building that mindset to start young, groom ourselves and learn as we experience stuff. We have a playground to play, and at the same time we have space to experiment, we have space to fail, and we have space to learn from those mistakes. At the same time, after all of this knowledge gathering that we have done, the best part is we have a platform given to us to exhibit our talents. We have a platform to show the world what we can do, and we have a platform to give us confidence that we are the change makers of tomorrow, and that we, although we are students, we can do anything that any other adult can, and then it gives us a confidence that age is just a number. We can start now and do great things as well. That's really wonderful, and thank you very much, Prajwal, for adding those lovely points and talking about Atal Tinkering Labs and the support that you guys are getting. And it's really hats off to the entire team who have been rigorously working behind the curtain to make the impossible possible. Right. Now I would move to Anushka, the silent girl in the team, but don't go by the looks, as they say, looks are really deceptive. Anushka, I would like you to ask your question to Abhishek. Yes, thank you. My question for you is that when launching your startup, what are the criteria that you look for in a partner or in a colleague, and how does it affect your growth? So in terms of partner, I think the most critical thing is first the frequency should match. The other thing would be you should have complementary skill set. Team, just by the numbers, doesn't make it a team. Just like the walls, it doesn't make it a home. Same goes with the team. And that's how you understand what is the team means. Means it is not just ki there are 3 people in the team. All techies are like they know how to code and all stuff, and they started up. That doesn't mean they are going to code all their life. From 0 to 1, they might require a very good technical person. Maybe at certain stage, somebody has to move out from technical and to look at the business aspect of it. That time you have to change it. And that flexibility, that pivot of the mindset, that I can say is very much important in the team. I would like to add that point. Thank you. Thank you very much, Abhishek, for putting that beautifully, because as you asked about the team, and team plays a key role wherever you're working, whether you work in a small organization or a big organization. If the team is not united, they are not knitted together, they are not one team, one dream, then the missions cannot be accomplished. And that's what we all are trying to do, and that's what you all are doing. Right? So no matter what, there will be difference of opinions irrespective of that. If we see in our family, there are 4 people, 5 people in the family, but everybody will not have the same mindset, right? They will have different moods, so you need to manage that. अगर आपके फैमिली में कोई दादा है, दादी है, पापा है, मम्मी है, काका है, काकी है, हर किसी का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, किसी को कुछ पसंद है, उसी तरीके से जब आप टीम के साथ काम करते हैं, अलग अलग लोगों की
पहचान अलग होती है. They have different qualities, capabilities and skill set. So if you are starting a company, you need to match those skills and that's how you need to channelize the energy. आप उस energy को right direction में लेके जाएं, तभी आप एक successful entrepreneur बनते हैं. Team is really the backbone of your entire journey. Yeah. Right, so are you happy with the response? Yes. Okay, great, lovely. You all are amazing. So next I would ask Prajwal to ask your question to Naina ma'am. Sure. So, ma'am, in today's world, we see that there's a lot of discussion and a lot of debate on which stream students should take. So, my first question would be, do you think a stream that you choose is important, or what is the importance of a stream when it comes to an entrepreneurship journey? And the second question is also about, a trend that is, visible among students. So that trend is nothing but dropping out. We've seen a lot of great people, entrepreneurs dropping out, and we feel that as students sometimes that is the best way to go. But at times we also know that's not the case. So what are your views on it, and how important do you think both of these topics play a role in an entrepreneurship journey? Thank you, Prajwal. Actually, this question is totally related to me, and because stream important है, but सबसे पहले ये चीज़ है कि आप क्या करना चाहते हो, because एक आप लोग सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि आप लोग को इस स्टेज पे ये प्लेटफॉर्म मिला है कि आप लोग डिस्कवर कर सकते हो, अपने पोटेंशियल को समझ सकते हो, जो कि हम लोगों ने थोड़ा टाइम लिया इस चीज़ को समझने में. बिकॉज आई एम ऑल्सो अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, बट ड्यू टू interest in fragrance field, I have done several courses in perfumery. So I don't have chemical background or technical background, but instead फिर भी मैं 10 साल से परफ्यूमरी की लाइन में बहुत कोर्सेज कर रही हूँ, और अब मैं फॉर्मुलेशन भी क्रिएट करती हूँ. इवन परफ्यूमरी को एक मशीन के कॉन्सेप्ट में भी मैंने डेवलप कर दिया है. तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है, जब आप इट टेक्स टाइम कि आपको समझना होता है कि आपके लिए क्या बेहतर है. लेकिन ये है कि साथ के साथ स्टडीज़ भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसके साथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो अगर आप इस एज में समझते हो कि नहीं, मैं मुझे मोटिव मिल गया है, एक एम है मेरे पास, मुझे मालूम है मैं अपना पूरा लाइफ टाइम इसको दे सकता हूँ, अपना 100% मैं इसके साथ ऑनेस्टी के साथ चलूँगा, तो मेरे ख्याल से फिर आप बाकी चीज़ों में जो डिसीज़न लेते हो, क्योंकि आप उतने मैच्योर्ड हो गए हो कि आप क्या चीज़ डिसाइड करते हो. लेकिन साथ के साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब उसमें आपने अपना पूरा 100% डेडिकेट नहीं किया और फिर आप बाद में ये सोचते हो कि नहीं पैरेलली हम ये भी कर लेते. फर्स्ट आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जिस चीज़ में हम जा रहे हैं हम उसमें अपना 100% देंगे और उसमें ऐसे रिजल्ट्स निकालेंगे जो बिल्कुल यूनिक हो. इवन आप चाहे पेंटिंग में हो, चाहे आप साइंस फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो. तो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है, वो पूरा पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि वो क्या चीज़ डिसाइड करता है. मे बी हमने बात किया था आपस में, तो जैसे इशरा का था कि वो जो है पीएचडी करना चाहती हैं लिटरेचर में, तो उनको अभी से पता है, तो वो बहुत क्लियर है अपने थॉट्स को लेकर, तो वो नेचुरल है कि वो एक अच्छा अभी से एक उसका पाथवे बना सकती हैं, एक उसका रोड मैप क्रिएट कर सकती हैं कि मैं कैसे कैसे क्या करूँगी. लेकिन जिसे एक क्लैरिटी नहीं है, तो मैं कहूँगी आपको एक एकेडमिक चीज़ें मिली हैं अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपको उसके संग जाना चाहिए और पैरेलली अपने पैशन को भी ढूंढते रहना चाहिए. आई थिंक सो. थैंक यू मैम. राइट, सो बहुत ही खूबसूरत बात कही मैं नैना जी ने कि आपका अपना पैशन होता है. बट मुझे एक किस्सा याद आ रहा है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ऐसे ही किसी सभा में बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे. तब किसी बच्चे ने पूछा कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बट माय पेरेंट्स वांटेड मी टू टेक साइंस ओनली, बट मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो वो भी चौंक गए कि मतलब मैं इस बच्चे को क्या जवाब दूँ. बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और है एंड पेरेंट्स प्रेशराइजिंग कि आप ये लीजिए. तो कई बार ऐसा होता है, इवन हमारे लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि वो वी आर मोर अट्रैक्टेड एंड attached to some other subject, but because of the pressurizing things from our parents, society, relatives, we want to choose something which we later regret. तो मैं और एक मंच के माध्यम से एक बात पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि आप देखिए आपके बच्चे की खूबसूरती किस चीज़ में है. वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, जो फील्ड लेना चाहता, आर्ट्स में, लिटरेचर में उसको इंटरेस्ट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले ही बच्चे आगे बढ़ते हैं.
ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की की है, और ये मैटर नहीं करता कि जस्ट बिकॉज यू आर एन इंजीनियर या डॉक्टर या आप साइंटिस्ट बने तो ही आप सफल होते हैं। सफलता के कई रास्ते हैं, बट आपका मकसद, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। वो जो ईगल है, अगर आपने सुना होगा कि ईगल थ्योरी, लाइक वो कभी भी अपने विजन को, मिशन को नहीं छोड़ता और ऊंचाइयों से नहीं डरता। जहाँ सारे परिंदे डर के अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, ईगल जो है बादलों के ऊपर उड़ता है। तो उसको पता है मेरा लक्ष्य, स्काई इज़ द लिमिट एंड नो वन कैन टच मी हियर। तो वो मिशन आपका होना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है, keep your eye on that and no matter what, there shouldn't be any distraction in life, right? और अगर तकलीफ हो रही है, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हम लोग कहीं चोट लगती है तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। बट अगर हम ईगल की थ्योरी को देखें तो उसका एक दौर ऐसा भी है जहां उसे खुद अपने सारे पंख उखाड़ के फेंकने पड़ते हैं। दैट इज़ अगेन, वो दोबारा एक पुनर्जन्म होता है, एंड दैट्स रियली ब्यूटिफुल। बट दैट 5-6 months द रिगरस टॉर्चर दैट दिस ईगल गोज थ्रू इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, बट उसके बाद काफ़ी खूबसूरत है। तो जब आप पहाड़ चढ़ते हैं बहुत तकलीफ होता है, बट चोटी पर पहुंचते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है कि नहीं? एग्री करते हैं सारे बच्चे? यस कहिए प्लीज। Lovely, you all are great, you all are fantastic. Right, so next I would like to move my question to Manav. Manav, I want you to ask your question to Prasen. Sure, ma'am. So my question is that as we know, the government of India is promoting the sense of innovation among young minds through initiatives like ATL Innovation Mission and icreate. How do you think this strategy will benefit India as a nation in the foreseeable future? Absolutely, that's a very nice question. Basically, see, earlier days these platforms were not available. You people are lucky that you got this platform. So, as rightly Gladys ma'am said that this is not like you stuck with one field and you can't do another field. It's you have your own degree of freedom that you can get into the things, and nowadays because of this chat GPT and everything, every access you have to perform it. So answering your question, that if you want to get into any segment, there is a government which is supporting a very broad spectrum, like ATL Tinkering Lab, it has been support, which is a very good platform, and icreate, from which n number of startups got benefited. It has n number of grants from ideation stage to proof of concept stage, from proof of concept to TRL9 prototype. Very good mentoring is happening at icreate. And these kind of platforms will take the generation to the next level, where people will not only think of their own benefits, but they will think of society problem, the core society problems. Like here, as we can see, and most of you, solving the gaps, right? And when you have this all support, including fund, including grants, see, earlier grants were only limited to CSIR labs and IITs and only the cream layer. It's not the situation right now. जो बीच के डब्बे के जो लोग होते हैं ना, पहले फोकस सिर्फ पहले वाला डब्बा ट्रेन का और लास्ट वाले डब्बे पे ही फोकस रहता था। अभी थोरोली बीच वाले डब्बा का जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप है, उनके ऊपर कोई फोकस नहीं रहता था। नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटी। सी, if you are not performing academically very well, that doesn't mean you are dumb or dull or you are not good in that. It means हर बंदे का या हर बंदी का एक टाइम होता है जिस टाइम पे they get mature by themselves. They realize their own potential, and that time they started focusing. See, exam-oriented mentality is one thing, but in another way, that was happening because we have parent pressure. We had education system which were very, very theoretical. So likewise, that scenario had changed. Now,
any student, irrespective of age, irrespective of background, they have very good platform which government has provided. And you have to not only learn, but do it into field, learn it, fail, again do it, again fail. And that failure brings you the sharpness to become a most successful person. So, so don't think like that, yeah, my friend or they had done that like that, and I might not good in this. See, you are not good in this because you are yourself teaching this. Yep, that's right. So that way, basically, this is how you have to focus on yourself. Yeah. कितना डिफिकल्ट है, हाँ? आज मैं बायोलॉजी का बंदा हूँ, चैट जीपीटी से मैं कोडिंग सीख रहा हूँ. What is wrong in that? So every access is available, everything is available to you. So in upcoming, India will be the next. If see, by saying that India will become superpowers and all those things, those are like a kind of jaggering things. If really India to compete with China like countries and to become a developed country, every person has to contribute, and the young generation got this platform since 2014, so you have to utilize it. Yep, right. Right, Prasen, I completely echo your thoughts. And as Prasen mentioned, Atal Tinkering Labs is doing a wonderful job by supporting students. They have this tinkering labs in more than 1,000 plus schools. And as many of you are getting benefited with this, if any of the schools do not have, you can approach them and take their help and see that how they can support you. जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, right? आज सारा देश हम एक साथ होकर हम आगे बढ़ने के साथ एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. सारी दुनिया के लोग हम पर नज़र रखे हुए हैं कि भारत में ऐसा क्या हो रहा है. अगर हम कई साल पीछे देखें कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, सब देशों में हमारा नाम लिया जा रहा है. हम तरक्की के उस मार्ग पर चल चुके हैं. अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बिकॉज एज वी से स्काई इज़ द लिमिट. एंड icreate जैसा कि अटल टिंकरिंग आप स्कूल्स में सपोर्ट करता है, हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं फ्रॉम आइडिया स्टेज. एज प्रसेन वाज मेंशनिंग, फ्रॉम आइडिया स्टेज वी हैव प्रोटोटाइपिंग एंड स्केल अप. वी हेल्प यू विद द फंडिंग, मेंटोरिंग, गाइडिंग. अगर आपको वहाँ पर आके रह कर सीखना है, आप सीख सकते हैं. नॉट ओनली यू कैन स्प्रेड द वर्ड टू अदर्स सो दैट मैनी पीपल कैन गेट बेनिफिटेड. अगर हम सारे लोग एक सही मार्ग की ओर चलेंगे तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर आवर कंट्री, राइट? सो दिस इज गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमिकल सिस्टम. ये हमारे सिस्टम को सपोर्ट करेगा, कई तरह के रोजगार क्रिएट करेगा, काफ़ी लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, राइट? तो हम जैसे कि लोग कहते हैं इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, वी वुड डू नॉट वांट दैट टैग नाउ. वी वांट टू बी इन द टॉप कंट्रीज की वेयर पीपल आर लुकिंग एट अस एंड हाउ वी कैन सपोर्ट. वी ऑलरेडी आर डूइंग इट, वी विल बी डूइंग इट, राइट? So thank you for this response, Prasen. And now I would ask Ishra to ask your question to Abhishek. Sure, ma'am. So I wanted to ask that business planning is very important to any startup. So how do you plan your upcoming themes and upcoming projects for, let's say, 5 years or 5 to 10 years? Yeah. So basically, planning for 5 years is basically the role of, I think so, that's where you look at a vision. And that is the goal. So I think the person should identify what he exactly wants, what the company exactly wants. Deducing from that to today, they break it into milestones and multiple checkpoints for their business goals. And that vision is very important. Like Apple always challenged the status quo, a very big vision. Similarly, each and every company, each and every idea should be looking at that vision and deducing that to today's level, coming at the ground level and doing it exactly what is required from you. One should always, or the role of the company is to
make it happen by whatever means. For the 5 years, 10 years plan should be on the ground, and that will make the India not just best, it would be the topmost at the cream layer. That's it. Thank you. Thank you. Right. Very good question. And एक छोटी सी घटना याद आती है कि लास्ट टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला CSIR भावनगर में एक डिस्कशन के लिए, वाज कॉल्ड देयर. तो वहाँ पर वन स्मॉल लिटिल गर्ल आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि आई वाज टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ एंड व्हाट ऑल यू नीड टू डू. We need to have certain things. So she asked me one question. I want to reach to the top. मुझे सबसे ऊपर पहुँचना है. Do you have any tricks इस चीज़ के लिए? What I can do for that? So I really liked the question and the way she asked with all innocence. So मुझे एक कहानी याद आई जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, आप लोगों ने शायद सुनी हो. तो एक समुंदर के किनारे, अगर आप कभी समुंदर के किनारे जाने का मौका मिला तो देखते हैं कि गुब्बारे वाला, द बैलून सेलर, वो गुब्बारे बेचने की कोशिश कर रहा था. एंड व्हेन यू सी दैट ओके छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो वो आकर आपको बताते हैं कि साहब ले लीजिए ना, मैडम ले लीजिए ना, बच्चा खुश हो जाएगा. तो बच्चा अपने दादाजी के साथ वहाँ वॉक कर रहा था. बच्चे ने बोला दादाजी मुझे ये गुब्बारा चाहिए, आई वांट दिस गुब्बारा. तो दादाजी लेकर गए एंड ही आस्क्ड द बैलून सेलर, I want the balloon which is going to take me to the top. सबसे ऊपर, the balloon which is going to reach the highest point. I want that one. Tell me which color will go to the top position. गुब्बारे वाला थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि बच्चे का ऐसा क्वेश्चन है. तो उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, बच्चे ये गुब्बारे का नहीं, जो तुम्हारे अंदर भरा है, that means the authenticity, the ethics, the value, the passion, the courage, और आपकी मेहनत, लगन और आप जिस निष्ठा के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा. इसमें रंग का, रूप का कोई वो नहीं है. राइट. तो ये मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि डोंट थिंक दैट यू ऑल कैनॉट डू इट. आप सभी अपने आप में सर्वोत्तम हैं. यू ऑल आर रियली डूइंग गुड in whichever field. Don't think that someone else is really doing good. Don't compare yourself. पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. राइट. हर उंगली का अपना महत्व है. लाइक दैट यू ऑल्सो आर capable of something else. Not necessary if you can't do this, you can do something else and others can't do. right. तो जैसे कि एक साइंटिस्ट जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, आप में से कौन बता सकता है कौन है वो जो कई बार फेल हुए? Who invented? बल्ब का आविष्कार. Who discovered this? बोलिए. एडिसन. Absolutely. So जब when एडिसन स्कूल जाते थे तो उनके टीचर्स क्लियरली उनको बोले कि इस बच्चे को स्कूल में नहीं लाना. उनके पेरेंट्स को एक चिट्ठी दी गई थी, शायद आपने पढ़ा होगा, कि योर किड इज़ नॉट केपेबल, प्लीज डू नॉट सेंड योर किड टू स्कूल. अदर किड्स आर गेटिंग वरीड, ही इज़ इनसेन. उनको पागल तक कहा गया था. बट आफ्टर मैनी फेलियर्स उनकी मम्मी ने उनको प्रोत्साहित किया कि बेटा, स्कूल वालों ने कहा है कि तुम इतने होनहार हो, इतने समझदार हो कि आपको पढ़ाने के लिए नहीं है. तो उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया. तो अगर आप लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, कभी आप गिरते हैं, तो उस छोटे बच्चे को याद करिए जो चलना सीखता है और कई बार गिरता है, कई बार उठता है और फिर दौड़ता है, मुस्कुराता है. तो उस बच्चे की तरह बनिए. इन साइंटिस्ट को देखकर भी आपको प्रेरणा मिलती होगी कि 10,000 times वो फेल हुआ, but still he did it. He did not stop, and that's why we have this. We all are sitting in with this electricity and this bulb and all these things. जिन्होंने इसका आविष्कार किया, right? So I hope we were able to convey the message. Anybody has any other thoughts, any questions anyone has from the audience? Yes. आप आगे आ जाइए प्लीज. Yes. What's your name? My name is Neerav Nagori. I am a class 12 student studying in Lakshmipad Singhania Academy, Kolkata. Yes. So, thank you for giving me the opportunity, ma'am. I would like You're to welcome. ask my question to Abhishek, sir. Sir, as you all know, as we enter into the market,
my question revolves around competition. So sir, आप जब भी products launch करते हैं market में, आपको compete करना पड़ता है. And आपको compete करते हुए, competitive रहते हुए, still you need to earn profits, sir. So how to counter the competition in the market, and how to healthily compete as well as earn profits? My question is that. Thank you, sir. Have you heard about this word called as USP? Yes, sir. Yeah, so I think the answer lies in it. USP basically means unique selling point, and each and every company that exists today has somewhere a little minimal USP inside them. The bigger companies, I think so, companies like Noise, Boat, and everyone in the market of smartwatches, everyone has in their unique perspective, like there is a competition between, let's say, Boat and Amazfit. Okay, these are very competitive market. What Boat does different, what Amazfit does different. कोई प्राइस में खेल रहा है, तो कोई क्वालिटी में खेल रहा है, तो कोई पर्सपेक्टिव में खेल रहा है, कोई विजन में खेल रहा है. Apple plays in a vision, Boat plays in a color, Amazfit plays in a price. That's how you have to look at it. That's it. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. I hope he answered your question. Right. So I hope we all were trying to deliver the message that no matter what, never give up in your life. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी सारा आसमान बाकी है. And no matter what, never give up. You all are amazing. You all are lovely. Loads of love and blessings to all of you. Do well in life. Thank you. Thank you so much, Gladys from icreate, and thank you so much to the Atal Tinkering Lab students for interacting with the startups, schools to startups being the theme of this session, being the theme of the Technology Week, National Technology Week this year. This is just a starting point. Let me say that to everyone, all the students, Atal Tinkering Lab students who are here, and all the students in general who've joined us through the YouTube Live and the broadcasting that we're doing, that this is just the starting point of a longer collaboration between Atal Innovation Mission and icreate to connect the student innovators from Atal Tinkering Labs to the startups of icreate and get a mutual collaboration and knowledge sharing between the two. I know from my various students in Tinkering Labs that there is a need for mentorship at a startup level. As they want to take their innovations ahead, there is a need for more focused training, more focused guidance, and this is something we hope to achieve with this collaboration in future. This session was just an introduction to tell you how you could actually work with each other. They could play a role in guiding you as startups, and you could actually bring out that creativity and ignite that spirit even in startups with your questions and with your ideas. So we hope that this goes a very long way. I thank icreate team once again and all the Tinkering Lab students who've come here, all the wonderful teams who've come here to participate in National Technology Week. And for the rest of you, we'll have many more opportunities in the future. Thank you very much. I'd like to, with that we close this session, but I invite all Atal Tinkering Labs teams, all the exhibitors, to please come forward for a group photograph. All the students, teachers who are exhibiting at this National Technology Week, please come forward for a group photograph. I also invite all the AIM team members to come forward for a photograph. TDB team as well, Dr. Smita and others to join us for this photograph. Thank you, Ms. Dipali. And ladies and gentlemen, let's put our hands together for that wonderful interactive session we just had. What a nice beginning to this third day of National Technology Week, which is being celebrated from 11th of May till 14th, that is tomorrow.
We would request for the group photographs, all the teachers at the back and students in the front. All the teachers to kindly be at the back.